Assalamu alaikum students. जी स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जी, इमरजेंसी एंड एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फार्मेसी डिपार्टमेंट किस टाइप की सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड कर सकता है। ये आप लोगों को मैंने जूम पे इसलिए आज इनवाइट किया है ताकि मैं इस स्लाइड को आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि इसमें मैंने आपको कुछ जो इक्विपमेंट्स हैं जो कि एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, या सिर्फ हम ये कह दें कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, मैं चाह रहा था कि आपको उसकी वीडियो जो है ना वो भी दिखा दूं और आप उनकी पिक्चर्स देखकर आप समझ सको कि किस टाइप का या किस शेप का वो इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। चार डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स हैं जी, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स। इसमें जी आप लोग मेरी आवाज़ सुन सक रहे हैं ना, और आप लोगों को ये शेयर भी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लोगों को ये स्लाइड्स नज़र आ रही हैं? ओके, टाइप 1 इमरजेंसी डिपार्टमेंट क्या कौन सा होगा? इसमें तीन जो है ना वो हमें देखनी चीज़ें। एक तो बच्चों इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, फिजिशियन होते हैं और नर्स होती हैं। टाइप 1 इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है उसमें फिजिशियन राउंड द स्पेशलिस्ट राउंड द क्लॉक अवेलेबल होता है, और जो टाइप 2 है उसमें स्पेशलिस्ट जो है वो ऑन कॉल होता है लेकिन फिजिशियन राउंड द क्लॉक अवेलेबल होता है। और जो थर्ड टाइप है उसमें फिजिशियन ऑन कॉल होता है और नर्स राउंड द क्लॉक अवेलेबल होती है। और जो टाइप 4 है वो रेफरल इमरजेंसी सर्विस है,
जो कि जस्ट आपको फर्स्ट एड दे के रेफर कर देती है टाइप 3 में, टाइप 2 में और टाइप 1 में। तो टाइप 4 में भी नर्स जो है ना वो अवेलेबल होती है। तो आपने ये देख लिया, इसमें 3 मेजर जो है ना हेल्थ केयर सिस्टम के लोग जो है ना वो इन्वॉल्व हैं। स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, स्पेशलिस्ट, फिजिशियन और नर्स। टाइप 1 में स्पेशलिस्ट जो है वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं उसमें स्पेशलिस्ट अवेलेबल होगा राउंड द क्लॉक इमरजेंसी सर्विसेज के लिए। टाइप 2 डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट ऑन कॉल हो जाता है और फिजिशियन जो है वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। और सर जो टाइप 3 है उसमें फिजिशियन ऑन कॉल होते हैं और नर्स जो है ना वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। और टाइप 4 में जस्ट फर्स्ट एड जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है और उसके बाद उसको रेफर कर दिया जाता है टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 में। अच्छा जी, अब हम इसके इक्विपमेंट्स देख लेते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये हम रिपीट भी कर लेंगे इसको। अब जो इमरजेंसी रूम है या इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वो किन इक्विपमेंट से या किन फैसिलिटीज से इक्विप्ड होना चाहिए। उसमें सबसे पहले है बच्चों, हमने ये देखना है कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं। हम रिस्टोर करते हैं पेशेंट के वाइटल साइंस को। और वाइटल साइंस में क्या क्या चीजें होती हैं जी। ब्लड प्रेशर को हमने रिस्टोर करना होता है, ब्रीदिंग को रिस्टोर करना होता है, इसके अलावा टेम्परेचर और हार्ट बीट, ये वाइटल साइंस हैं। अगर इसे रिस्टोर कर लें तो पेशेंट जो है ना आप उसको दोबारा से मतलब अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो इक्विपमेंट है ये ज्यादातर एयरवे ब्रीदिंग से रिलेटेड है कि आपने ब्रीदिंग जो है ना उसको रिस्टोर करना है। इसमें सबसे पहला है जी बैक वेल्व मास्क। बैक वेल्व मास्क एक्चुअली स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, तो उसके बाद जो है ना इसके बारे में हम थोड़ा डिस्क्राइब में इसको कर दूंगा। When you bag a patient, you need 2 things. You need a face mask, and this is an adult face mask. You'll see there's a pointy tip that should go over the nose, and the more rounded should go over the mouth. This will be attached to a bag valve mask, and the bag valve mask will be attached to the oxygen on the wall. We can do this as a 1-person or a 2-person technique. First, we're going to demonstrate the 1-person technique. You want to place the pointy top over the nose and the other part over the mouth. You want to place your patient in the sniffing position. And you want to make a C and an E. So the C goes around the top, and the E, you're placing your fingers on the patient's mandible and pulling the patient's face up into the mask. Then when you give your breath, you want to make sure you give enough time for inhalation and exhalation. Again, think about pulling your patient's face into the mask as opposed to pushing the mask into the patient's face. If you have a 2-person technique, it's basically the same thing, except you have one person who's bagging, and then you have another person who's holding the mask onto the face. It's the same C to E technique, and obviously you get a better seal if you have 2 hands holding the mask instead of 1. The downside to this is that it just makes for a more crowded space at the top of the patient's head and bed. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो बैक वेल्व मास्क है एक्चुअली ये पॉजिटिव प्रेशर जो है ना और रिससिटेशन के लिए यूज होते हैं, जिसमें ब्रीदिंग जो है ना एक्चुअली हमने उसको रिस्टोर करना होता है। और ये मैनुअल रिससिटेटर है। इसमें 1% जो आपने भी वो देखा उसको, या फिर ये 2% जो है ना इसमें वो इन्वॉल्व होते हैं।
अगर ये इसमें सिर्फ 1% इन्वॉल्व है तो उसने जो मास्क है जो कि उसकी नोज पे या लेरेंजियल मास्क है वो भी उसने होल्ड किया हुआ होता है, फिक्स किया हुआ होता है नोज पे और माउथ पे। और दूसरा जो है वो दूसरा जो बलून है उसको भी प्रेस किया जाता है ताकि पॉजिटिव प्रेशर जो है ना वो लेरिंक्स में। वालेकुम सलाम जी हमाद, क्या आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? ये मैनेज पार्टिसिपेंट सब आ तो रहे। अच्छा मैंने ऐड भी करना है इनको सबको। मैंने तो यार लेक्चर स्टार्ट भी किया, मैं समझा था आप लोग सुन रहे हो। इसमें एडमिट लिखा हुआ है सारा, एडमिट ऑल। ओके आई एम रियली सॉरी। चले मैंने अब आप लोगों को कर दिया, अब हो गया। चले सही, थैंक यू। यार वो मैंने ना अब आपको ऐड कर, ठीक है थैंक यू। राइट सर। ये आप यस सर, आप आ गए हैं सारे। हाँ हम बात ये आप आई थिंक आप लोगों की वीडियोस भी जो है ना वो भी ऑन की है। चले सर आप ऑफ कर सकते हैं, आप सबको म्यूट भी कर सकते हैं, सबकी वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं आप कर लें। स्पॉटलाइट ऑलवेज टच ऑन वीडियो इनेबल एचडी display parts features. Okay, always show video preview and जी स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करें। आप लोग मुझे सुन सक रहे हैं और ये आपके साथ ये मैंने अपनी स्लाइड भी शेयर की है। यस सर स्टार्ट करें। आज स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है एक्सीडेंट और इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में किस टाइप के सर्विसेज जो है ना वो फार्मासिस्ट प्रोवाइड करता है या फार्मेसी डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। इसमें 3 कैटेगरीज हैं, एक स्पेशलिस्ट है, फिजिशियन और नर्स। अगर टाइप 1 तो उसमें स्पेशलिस्ट जो है ना वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। टाइप 2 में स्पेशलिस्ट ऑन कॉल है लेकिन फिजिशियन जो है वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। और टाइप 3 में फिजिशियन ऑन कॉल है और नर्स राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। और टाइप 4 जो है ना वो एक्चुअली रेफर कर दिया जाता है फर्स्ट एड देके टाइप 3, टाइप 2 या टाइप 1 डिपार्टमेंट्स में। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है सर्विस प्रोवाइडर्स की भी और डिफरेंट कैटेगरीज है डिपार्टमेंट्स की भी, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स की। अब हम ये देख लेते हैं कि ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स जो है ना वो किन फैसिलिटीज से इक्विप्ड होते हैं। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है बच्चों इसमें इन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक्सीडेंट इमरजेंसी जो है ना इस सिचुएशन को हम कब कहेंगे, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ये हम बाद में भी इसको रिपीट कर लेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम इक्विपमेंट्स पे आ जाएं क्योंकि वो इक्विपमेंट्स की वीडियोस जो है ना वो मैंने कुछ कलेक्ट की हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। एक्चुअली इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, वाइटल साइंस को रिस्टोर करते हैं, पेशेंट के वाइटल साइंस। और आप लोगों को पता है कि वाइटल साइंस कौन कौन से हो सकते हैं, कोई बता सकते हैं आप में से? वाइटल साइंस सर इसमें हार्ट रेट होता है और रेस्पिरेटरी रेट होता है, पल्स रेट होता है। ग्रेट, ठीक है। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग,
तो जो हम पहले हमें ब्रीदिंग कैसे रिस्टोर करना है, इसमें सबसे पहला जो इक्विपमेंट है वो बैग वेल्फ मास्क है, ठीक है। इसको हम मैनुअल रिससिटेटर भी कहते हैं। एक्चुअली इसमें एक बलून टाइप जो है ना बैग होता है जिसको प्रेस करते हैं, और इसको प्रेस करने से क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होता है, और एक मास्क जो है ना वो लेरिंक्स पे जो नोज और माउथ जो है ना उसको कवर करता है, और ट्रेकिया में जो है ना मतलब थ्रू ट्रेकिया वो लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर प्रोवाइड करता है। अब ये मैं आपको इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आप उस इक्विपमेंट से जो है ना वो आप अंडरस्टैंड इजीली और आप वेल अवेयर हो। When you bag a patient, you need two things. You need a face mask, and this is an adult face mask. You'll see there's a pointy tip. It should go over the nose and over the mouth. This will be attached to a bag valve mask, and the bag valve mask will be attached to the actual ball. This is a one-person or a two-person technique. We're going to demonstrate the one-person technique. You want to place the pointy top over the nose and the other part over. You want to place your patient in the sniffing position, and you want to make the C goes around the top. सर वीडियो नहीं आ रही है। Fingers on the वीडियो नहीं आ रही है? नहीं। ओके वेट सर काइंडली चेक कीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं उनको ऐड करने के लिए। अच्छा जी। बड़ी यार मोबाइल दे ना। अब आपको वीडियो शेयर हो रही है ना? जी मैं and this is an adult face mask. You'll see there's a pointy tip that should go over the nose. जी हम अब स्क्रीन कोलेरा से इधर पे चलाएं। An adult face. When you bag a patient, you need two things. You need a face mask, and this is an adult face mask. You'll see there's a pointy tip that should go over the nose, and the more rounded should go over the mouth. This will be attached to a bag valve mask, and the bag valve mask will be attached to the oxygen on the wall. We can do this as a one-person or a two-person technique. First, we're going to demonstrate the one-person technique. You want to place the pointy top over the nose and the other part over the mouth. You want to place your patient in the sniffing. सर जस्ट ऑडियो आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। And C. मुझे अब तो वीडियो आनी चाहिए, तो The C मैंने goes around the top, and the E. शेयर की है You're placing your fingers on the लेकिन patient's मैं फिर से mandible देखता हूं। and pulling the patient's face up into the mask. It goes around the top, अब आ रही है वीडियो? and the E. You're placing your fingers on the patient's mandible and pulling यस the सर आ रही है। patient's face. Okay. And the E. चलिए फिर स्टार्ट से देखें। When you bag a patient, you need two things. You need a face mask, and this is an adult face mask. You'll see there's a pointy tip that should go over the nose, and the more rounded should go over the mouth. This will be attached to a bag valve mask, and the bag valve mask will be attached to the oxygen on the wall. We can do this as a one-person or a two-person technique. First, we're going to demonstrate the one-person technique. You want to place the pointy top over the nose and the other part over the mouth. You want to place your patient in the sniffing position, and you want to make a C and an E. So the C goes on the top, and the E, you're placing your fingers on the patient's mandible and pulling the patient's face up into the mask. And when you give your breath, you want to make sure you give enough. Again, think about pulling your patient's face into the mask as opposed to pushing the mask into the patient's face. If you have a two-person technique, it's basically the same thing, except you have one person who's bagging, and then you have another person who's holding the mask onto the face. It's the same C to E technique, and obviously you get a better feel if you have two hands holding the mask instead of one. The downside to this is that it just makes for a more crowded space at the top of the patient's head and bed.
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। ये मैनुअल रिससिटेशन की एक टेक्निक है, बैग वेल्व मास्क, जिसमें एक 1% टेक्निक है और 2% टेक्निक है। मतलब 1% टेक्निक और 2% टेक्निक में कोई क्या डिफरेंस है कि इसमें आपने देखा है दो ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक ने मास्क जो है ना उसको होल्ड करना है और एक ने पंप करना है। तो ये दो बंदे भी कर सकते हैं और एक बंदा भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और टेक्निक, चेस्ट ड्रेन, जिसे हम चेस्ट ट्यूब्स भी कहते हैं या अंडर वाटर सील्ड ड्रेनेज भी कहते हैं। तो हमारी प्लूरल स्पेस है लंग्स में, प्लूरल स्पेस है जो इन्फेक्शन में वो फ्लूइड से या एयर से जो है ना वो भर जाती है, तो उसको ड्रेन करने के लिए जो है ना ये टेक्निक यूज की जाती है, जिसे अंडर वाटर सील्ड ड्रेनेज कहते हैं। अब आप इसकी वीडियो पहले देखें तो फिर मैं आपको जो है ना इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। All chest tube collection systems are based on a 3-bottle system. Here's our 3-bottle chest tube collection system. So we've talked about the collection bottle and a 3-bottle system. All chest tube collection systems are based on a 3-bottle system. Here's our 3-bottle chest tube collection system. So we've talked about the collection bottle and a 3-bottle system. Fluid from the chest collects into bottle 1. Air from the chest tube bubbles into bottle 2. Bottle 2 is the water seal of the system. The water seal is usually 2 centimeters, meaning the tube going into the water is submerged under 2 centimeters. A water seal of 2 centimeters means that air coming from the chest tube must overcome the pressure of 2 centimeters of water to escape. The water seal of any chest tube system detects air coming from the chest tube. The water seal is also called the air leak monitor. The water seal also functioned as a check valve, preventing air from entering the chest from the chest tube system, hence the name water seal. Here's the water seal of this system. Again, the water seal of any chest tube system is usually 2 centimeters of water. The water seal of any chest tube system will detect air coming from the chest tube. When should the water seal bubble? Well, that depends on the clinical situation every single time. So should the water seal be bubbling? Well, is air coming from the pneumothorax? Does this person have a pneumothorax and we're trying to pull the air out of their pleural space? Well, for the air to get स्टूडेंट समझ आई आपको इस मैकेनिज्म की? सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आप खुद? जी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आई इसकी। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये 3 बॉटल सिस्टम है। अब इसमें चेस्ट से आपने ड्रेन करना है फ्लूइड को, ठीक है, मतलब पस को, फ्लूइड को और एयर को, ठीक है जी। अब आप देख लो जो पहला बॉटल जो है उसमें फ्लूइड जो है वो ड्रॉप वाइज ये जो जिसमें डिस्टिल वाटर है उसमें एडो उसमें गिर रहा है, और एयर जो है ना एक्चुअली वो इस एरिया में है, और एयर जो है ना वो फिर जाएगी सेकंड बॉटल में, और सेकंड बॉटल में जो एयर जिस पाइप से जा रही है वो 2 सेंटीमीटर जो है ना वो वाटर में इमर्स हुआ हुआ है। और ये इसीलिए कि अगर ये ट्यूब वाटर से ऊपर होगी वाटर लेवल से, तो ये वापस जो है ना एयर दोबारा से लंग्स में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इन ट्यूब्स में कोई वेल्व नहीं है, ये प्लेन ट्यूब्स है या हॉलो ट्यूब्स है, तो इसलिए इसको 2 सेंटीमीटर जो है ना वाटर लेवल, मतलब 2 सेंटीमीटर डाउन वाटर लेवल रखा गया है, ताकि एयर बबल्स जो आपको ये वाइट डॉट्स नजर आ रहे हैं बॉटल 2 में, वो बबल्स जो है ना एयर बबल्स वो वाटर के अंदर ही रहे, उसी सरफेस के अंदर ही रहे, ठीक है। वो इस ट्यूब में इस बॉटल 2 से बॉटल 1 में ना जाए और बॉटल 1 से दोबारा लंग्स में ना चले जाए।
तो इसलिए इसको वाटर सील कहते हैं एक्चुअली। अगर ये ट्यूब वाटर लेवल्स के अंदर ना हो, मतलब इमर्स ना हुई हो ये ट्यूब, तो ये सील नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर एक वेल्व क्रिएट किया गया है वाटर लेवल में इसको डिप करके इस ट्यूब को, तो एयर जो है वो यहाँ पर ही रहेगी। और ये जो वाटर 3 है, ये जो ट्यूब बॉटल 3 है, ये अगर कोई एयर का प्रेशर आता है ऐसा कि जो इस सील को भी रप्चर कर देता है, तो वो जाएगा बॉटल 3 में, और बॉटल 3 से फिर वो इवैक्यूएट हो जाएगा आउटसाइड। ठीक है बच्चों, बॉटल 1 में फ्लोट आ रहा है, ड्रॉप वाइज इस बॉटल 1 में गिर रहा है, और जो एयर होगी वो चली जाएगी बॉटल 2 में। बॉटल 2 में वाटर सील है, वो इसलिए वाटर सील है क्योंकि जो ट्यूब है वो वाटर के अंदर इमर्स हुई है, डिप हुई है, तो एयर जो है वो वाटर के अंदर ही रहेगी। और अगर इस एयर का प्रेशर ज्यादा होगा तो इस वाटर सील को वो रप्चर करेगी, और बॉटल 2 से वो चली जाएगी बॉटल 3 में, और बॉटल 3 में भी अगर उसका प्रेशर ज्यादा होगा एयर का, तो वो इवैक्यूएट हो जाएगी। अब समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। ये जो 3 वाला यानी कि वो बॉटल है सर, उसमें ट्यूब ज्यादा डिप नहीं हुई हुई, इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि एयर जो है वापस बॉटल 2 में चली जाए। जी, अगर वो बॉटल 2 में भी जाएगी तो बॉटल 1 में तो जा नहीं सकती एयर। ओके सर। वो इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि बॉटल 2 से बॉटल 1 में आप देख लें जो ट्यूब है वो वाटर के अंदर इमर्स हुई हुई है। यस सर, यस सर। तो इसलिए ये इसीलिए इसको वाटर सील कहते हैं, इस ट्यूब को सील कर दिया। ओके सर। ठीक है, ओके सर। मुझे अगर 2 मिनट दीजिएगा, एक मैसेज टाइप कर लूं। आप अभी नेक्स्ट देखेंगे कॉम्बी ट्यूब। स्टूडेंट्स, ये कॉम्बी ट्यूब भी देखिएगा ये क्या होती है। My name is James McLaughlin. I'm a paramedic firefighter with Black Forest Fire Rescue. This is my partner, Travis, and we're here to demonstrate placement of the dual lumen airway device today. First thing you want to do is select your patient in. In this case, this patient's unresponsive and they are breathing inadequately. They do not have a gag, so we're going to place an oropharyngeal airway. You've properly sized it, place the oropharyngeal airway, and now we're going to assist ventilations with a bag valve mask device. I'm looking for good rise and fall of the chest with ventilation, and my partner is going to assess lung sounds. With the presence of lung sounds, I've decided to place a dual lumen airway device. My partner is going to take over ventilations while I prepare my equipment. Thank you, sir. All right. The device we're going to utilize today is the CombiTube. Another dual lumen airway device is the PTL. If you're utilizing the PTL, please follow your local protocols. When checking the CombiTube, you want to check both the distal cuff and you're checking the cuff to make sure there's no leaks or anything of that nature. Then you'll go ahead and deflate the cuff and get it in the operational readiness mode. And then you want to check the proximal cuff. And again, checking to make sure there's no leaks or anything of that nature. Then you'll go ahead and deflate that cuff as well. Okay. Now that you've checked your CombiTube and you know that it's ready to go, you want to lubricate the distal aspect of the tube. And then I'm going to instruct my partner to stop them. अच्छा स्टूडेंट्स, इसको कॉम्बी ट्यूब क्यों कहते हैं?
इसको कॉम्बी ट्यूब इसलिए कहते हैं कि इसका एक तो इसमें कॉम्बिनेशन है, 2 ट्यूब्स होती हैं एक्चुअली इस कॉम्बी ट्यूब में। एक डिस्टल पोर्शन होता है, 2 ट्यूब्स होती हैं जो कि जंक्शन करती हैं और एक सिंगल ट्यूब जो है ना वो बन जाती है और सिंगल ट्यूब ट्रेकिया में इंसर्ट की जाती है। और वो जो 2 ट्यूब्स हैं उसमें से जो ब्लू ट्यूब होती है एक्चुअली वो उस पे जो है ना ये जो वेल्व मास्क है ये इंसर्ट किया जाता है और उसे पंप किया जाता है। मैनुअल रिससिटेशन भी दी जा सकती है और इसको आप जो है ना ऑक्सीजन सप्लाई के साथ भी लगा सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसमें बोगी। बोगी is a device which allows Seldinger like technique of intubing a patient's airway. Intubing क्या होती है जी? Intubing होती है insertion of a tube into trachea, ठीक है, ये इंट्यूबेट करना होता है। और इसमें सेल्डिंगर जो है ना एक्चुअली ये साइंटिस्ट था जिसने इसको सबसे पहले डिवाइस किया। ये एक ट्यूब होती है जो कि पहले ट्रेकिया में ले जाई जाती है, सेम जैसे हम एंजियोग्राफी करते हैं उसमें भी एक ट्यूब होती है जो कि अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये जरा कॉल कर लो उसको कॉल आ गया इसी नंबर पे। हाँ जी ओके थैंक यू। अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि ये बॉगी ट्यूब जो है ना उसको कैसे इंसर्ट किया जाता है और इससे ट्रेकियल ट्यूब कैसे इंसर्ट की जाती है। So we're going to introduce the word. Open to the mouth just like normal, and trying to find epiglottis. And you try to get the best view of the glottis you can find. But even if you just find epiglottis, you will be able to intubate this patient. That's a Cormac Mahane grade 3 view. Once you find epiglottis patient, that's a स्टूडेंट्स ये जो इसने लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है ये लैरिंजियल स्कैनर है, ठीक है, जो कि स्कैन करता है या बताता है कि लैरिंक्स कहाँ पर है। और इसके राइट हैंड में जो है ये बॉगी है, एक्चुअली ये ट्यूब है जो कि इंट्यूबेट करने के लिए यूज की जाती है। ये एक्चुअली पैसेज जो है ना वो उसको बताएगी कि ट्रेकिया का पैसेज क्या है। और जब वो इसको कैसे पता चलेगा कि ट्रेकिया में जा रही है, तो ट्रेकिया में जो ग्रूव्स होते हैं या जो रिंग्स होते हैं एक्चुअली वो इसको जब फील होंगे इस बंदे को, इस फिजिशियन को, तो ये समझेगा कि ट्रेकिया में जो है ना ये इंट्यूबेट हो गई है। Once you find epiglottis, what you're going to do is you're just going to ride the epiglottis with your bougie. So you're just going along the underside of the epiglottis with your bougie. And if you're doing that, you will enter glottis and you will be in the trachea. And that's the key. Now, how do you know you're in? Well, there's 2 ways that are described. The first one is you can actually feel the tracheal rings, and you'll feel the tip of that bougie, that coude tip, rubbing against the tracheal rings. For me, sometimes I feel it, sometimes I don't. What I keep doing is I keep
pushing the bougie forward very gently. And eventually, if you're in the tracheobronchial tree, you'll get holdup. Either you'll hit the carina or one of the branches of the main stem bronchi, and the bougie won't go any further. It'll stop at about 40 centimeters. If you're in the esophagus, on the other hand, it'll keep going. You can place that thing all the way to its hilt. So that's how you know. And once you've confirmed by holdup that point of the bougie stopping, you just withdraw until you're at about 25, and then you'll put the tube onto the bougie. Now, for this, you really want a partner. It's really tough to do yourself because one of the key mistakes that's made is taking the laryngoscope out of the mouth. You want to leave the laryngoscope in the mouth to keep those posterior pharyngeal structures from collapsing on your bougie. So you have an assistant place the tube over the bougie, hold the top of the bougie, and this now allows you to advance the endotracheal tube through the cords. Just given the shape of the endotracheal tube, oftentimes it'll hold up on some of the cartilage, or it'll just get caught on the cords. What you want to do is just rotate the tube counterclockwise 90 degrees, and then gently go back and forth and rotate ever so slightly, and eventually the tube will pass. As long as you're gentle, you're not going to cause any airway trauma. If you try to jam this thing in, that's when you run into problems. So eventually the tube will start passing. You go into about 22 or 23. सर ये अनकॉन्शियस पेशेंट है. सॉरी, क्या पूछ रही है? सर मैंने कहा कि ये अनकॉन्शियस पेशेंट है. हाँ जी, ये सारे ही अनकॉन्शियस पेशेंट हैं जिन पे आपने वाइटल साइंस रिस्टोर करने हैं, रिकवर करने हैं. और ये तमाम इक्विपमेंट है ना, ये ब्रीदिंग साइंस जो है ना, ब्रीदिंग को रिकवर करने के लिए. लेकिन सर ये जो अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो इसका फिर हम माउथ ओपन करने में इशू नहीं होगा हम लोगों को? वो एक्चुअली इसमें इन्होंने बताया नहीं है. वो नेक्स्ट जो है ना, उसमें वो चीजें हैं कि आपने जो है ना, जो जब अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट तो उसके जॉस जो है ना, जॉस मसल्स वो रिलैक्स हो जाते हैं, और टंग जो है ना वो ग्लॉटिस को जो है ना, या लेरिंग्स को ब्लॉक कर देती है, उसका वे. तो ब्रीदिंग जो है ना वो डिफिकल्ट हो जाती है. इसके अंदर वो आप अगले जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें वो वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की हुई है. और अगर ये बंदा जो है ना, अगर ये अनकॉन्शियस नहीं है, मतलब कॉन्शियस ही है लेकिन उसको ब्रीदिंग का इशू है, तो फिर भी ये किया जा सकता है उसको लोकल एनेस्थीसिया देकर. ओके सर. क्योंकि आप लोगों का काम जस्ट ये इक्विपमेंट जो है ना, ये सप्लाई करना है. तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को ये इक्विपमेंट जो है ना रिकॉग्नाइज आप लोग कर सको कि ये कौन सी ये ट्यूब किस लिए है और इसकी शेप कैसी होती है. इसलिए मैंने जस्ट आपको ये वीडियोस दिखाई हैं, क्योंकि मैं अगर आपको वैसे बताता तो शायद आप लोगों को समझ ना आए. ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू सर. अब इसमें इसने एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है ना वो इंसर्ट की है विद द हेल्प ऑफ इसको हमने क्या बोला था जी अभी, ये हम क्या देख रहे थे? विद द हेल्प ऑफ बोगी एक्चुअली, सॉरी. अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं. ओके, screen sharing. नेक्स्ट है जी हमारे पास लेरेंजियल मास्क एयरवे. अब ये उस वक्त है बच्चों जब पेशेंट जो है ना वो अनकॉन्शियस है, तो आपने उसका एयरवे जो है ना वो कैसे ओपन रखना है. ठीक है, उसके लिए जो मास्क यूज होता है वो अब आप इसकी वीडियो भी देख लें. Mask that is the laryngeal mask airway externalizing the glottis, while chest compressions continue uninterrupted.
This makes training easier and insertion more reliable. The laryngeal mask airway is a tube with a distal inflatable mask that is placed in the patient's hypopharynx. A size 5 laryngeal mask airway fits most adult males, while a size 4 fits most adult females. Before using the airway, make sure the mask inflates properly. Before inserting the laryngeal mask airway, deflate the cuff completely, making sure there are no folds or bumps in the mask. Lubricate the posterior surface of the mask with a water-soluble lubricant. Place the laryngeal mask airway in the open mouth, with the opening of the mask facing the patient's tongue. Advance the device to the back of the tongue. In a smooth motion, use your index finger to press the laryngeal mask airway against the roof of the mouth and downward. Continue advancing the device until you feel resistance, which indicates the distal end of the tube has reached the hypopharynx. Withdraw your finger and inflate the mask. A size 4 mask will take 30 milliliters of air. A size 5 will require 40 milliliters. Once inflated, the laryngeal mask airway will center itself in the mouth. If placed correctly, oxygen will flow from the device into the trachea. If there is no chest rise with ventilation, the laryngeal mask airway may be too shallow, or the cuff may have folded during insertion, blocking the airflow. Pull the laryngeal mask airway out and reinsert it. One way to prevent folding is to partially inflate the cuff during insertion. The laryngeal mask airway can also be placed upside down and rotated in the back of the throat as it is advanced to maneuver the tongue forward as it slides into position. स्टूडेंट्स, अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है और आपने उसको ट्रेकियल ट्यूब जो है ना बार बार इंसर्ट करनी है, तो फिर आप ये लेरेंजियल मास्क जो है ना वो यूज करते हैं, जो कि आपको इजी जो है ना वो इंसर्शन जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट है जी हमारे पास मैकगिल फोर्सेप्स, और ये भी मैकगिल साइंटिस्ट था जिसने इसको सबसे पहले यूज किया या डिवाइस किया, और इसलिए इसका नाम जो है ना वो मैकगिल फोर्सेप्स है. इसको भी आप देख लो. We're going to demonstrate how to use the laryngoscope and McGill's forceps. So first I'm going to elevate the patient's head using a pillow or a blanket to make sure that his mastoid process is in line with it. We're going to demonstrate how to use the laryngoscope and McGill's forceps. So first I'm going to elevate the patient. अब इसके लेफ्ट साइड पे ये लेरेंजोस्कोप पड़ी है और इसके राइट साइड पे जो है ना ये मैकगिल फोर्सेप्स है. To make sure that his mastoid process is in line with his hand, making sure that the light's working. Hold the patient's head back, place it in from the right side of the mouth, sweeping across the tongue till the tip reaches the left of the roof, and I can visualize the vocal cords. And then if I see an obstruction, I'm going to get McGill's forceps. And place it down, running along the laryngoscope, grasping the obstruction and pulling it out. McGill's forceps. So first, I'm going to demonstrate how to use the laryngoscope and McGill's forceps. So first, I'm going to elevate the patient's head using a pillow or a blanket to make sure that his mastoid process is in line. लेफ्ट साइड पे लेरेंजोस्कोप और राइट साइड पे मैकगिल फोर्सेप्स है. Making sure that the light's working. Hold the patient's head back, place it in from the right side of the mouth, sweeping across the moon, running along the laryngoscope, grasping the obstruction and pulling it out. ये स्टूडेंट्स ये फोर्सेप जो है ना ये कोई मटेरियल इंसर्ट करने के लिए जो है ना वो यूज की जाती है ट्रेकिया में. नेक्स्ट है स्टूडेंट नेजल कैनोला, और ये आप लोगों ने देखा होगा, ये भी ऑक्सीजन जो है ना वो सप्लाई करता है एक्चुअली.
स्टूडेंट्स ये फिर हम बाद में पढ़ लेंगे। नेजल कैनुला जो है ना वो हम कल जो है ना इसको स्टार्ट कर लेते हैं नेजल कैनुला से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से दोबारा इसी जूम पे ही मीटिंग करते हैं। और अगर ये आप लोगों के लिए मुझे तो वैसे इसमें ज़रा थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है, अगर आप लोगों के लिए इजी है, मतलब कि आप लोगों को समझ आ रही है, आवाज़ आ रही है या ये स्लाइड्स वगैरह सही शेयर हो रही हैं, तो मुझे बता दीजिएगा। सिर्फ यही चैप्टर जो है ना वो हमने इस पे करना है, बाकी जो है ना वो मैं आपको फेसबुक पे करवा दूंगा। इसमें वीडियोस हैं जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को ज़रा समझ में आ जाए, इसलिए ये आपको इस पे मैं जूम पे आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। सर स्लाइड्स तो ठीक शेयर होती हैं लेकिन वीडियोस नहीं ठीक आती हैं, अटक अटक के आती हैं। अच्छा, एक्चुअली वो वीडियो ना मैं अटैच भी नहीं कर सकता इसके साथ, क्योंकि वो ये फाइल का साइज 70 MB था अभी, और अभी इसमें सिर्फ 4-5 वीडियोस हैं। तो चले इसको, इस चैप्टर को इसी तरह गुजार लेते हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आएंगी और ये सारी डिटेल में आपको करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। जो इन्फॉर्मेशन आपके स्लाइड पे है ना, जस्ट आपको वो पता हो, और मैं आपको इसकी इमेजेस दूंगा, फिगर्स दूंगा एग्जाम में, तो आपने जस्ट उसको लेबल करना होगा कि ये कौन सा इक्विपमेंट है। ये तो मेरे ख्याल में इजी होगा आप लोगों के लिए। अगर आप सर इसको स्लाइड से ही करना है हमने? जी जी, ये भी स्लाइड से करना है क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है। ओके चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, अल्लाह हाफिज। ये अब मोहम्मद अली कहलू साहब आए हैं अभी इस टाइम।